and welcome everyone. This is video number 2 for chapter number 2, that is basic concepts of economies. Just a quick revision about goods. Goods are all those things which satisfy human wants. Goods are all material things that are tangible things, the things which we can touch, see and also feel. So anything that is required to satisfy our desires or our needs or wants is termed as goods. Next is services. Services are non-material things, non-material or intangible things, the things which you cannot see, which you cannot touch but only can feel. Okay. Services can be of different types, like services performed by barbers or doctors or washerman, cobbler, tailor, teacher, etc. So some of our wants are satisfied by goods and some of our wants are satisfied by services. Hence, all human wants can be satisfied either with goods or services. Next is types of goods. The first is free goods and economic goods. Free goods are all those goods which are available to human beings as free gift of nature, like air, sea, water, sunlight, sand in desert, etc. Next is economic goods. These goods are not free gift of nature nor unlimited supply in nature. Okay, so all these goods are known as economic goods. All these goods are sold in exchange of money, or you can say sold and exchanged in market only for exchange of money. Next is consumer goods and capital goods. Consumer goods are those goods which are directly consumed by the consumer. Examples are bread, biscuit, butter, jam, rice, fish, egg, shoes, shirts, fan, book, pen, cooking gas, etc. Okay, so all those goods which are directly consumed by the consumer are known as consumer goods. Whereas on the other hand, capital goods are those goods which are used for further production of goods and services. Okay. So the goods which are not directly used to satisfy consumption but which are used in further production are either called capital goods or producer goods. The examples are seed, fertilizers, tools, machines, raw materials, etc. Next we start with single use and durable use goods. Single use goods are those goods which are used only once. Now these goods can be both consumer goods as well as producer goods. So goods both consumer and producer goods which are only used or consumed for single time or only once are known as single use goods. मतलब वो goods जिसको सिर्फ आप एक single time use कर सकते हो, वो commodity जिसको आप सिर्फ single time use कर सकते हो, फिर से reuse नहीं कर सकते. Okay, example are bread, milk, fruits, vegetables, right? Milk एक बार आपने consume कर दिया, ठीक है, तो आप फिर से उसको consume नहीं कर सकते. Okay, same milk को. Okay, etc. are some examples of single-use consumer goods. On the other hand, seeds, fertilizers, raw material, etc. ठीक है, are example of single-use producer goods. ठीक है, seeds को अगर एक बार आपने plantation के लिए use कर दिया तो आप same seeds को फिर से use नहीं कर सकते. The same rule applies to fertilizers, raw materials, etc. The next is durable goods. Durable goods वो जो आप long time तक, ठीक है, बार बार continuously within the time span आप उसको use कर सकते हो. Okay, so some goods again, that is both consumer goods as well as producer goods, can be used for considerable period, that is a long period, that is they can be used again and again. They are called durable use goods. For example, a table, chair, clothes, shoes, etc. are all durable consumer goods. ठीक है, consumer goods है और साथ में durable भी है. ठीक है, मतलब आप डायरेक्टली कंज्यूम करते हो और बहुत लॉन्ग टाइम तक यूज करते हो. जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आप एक टेबल या चेयर को आप लाइक से 5 इयर्स 10 इयर्स तक भी यूज कर सकते हो. ठीक है, वेयर एक ब्रेड है या मिल्क है, ठीक है, क्लियर, आप उसको इतने लॉन्ग टाइम तक यूज नहीं कर सकते, वो सिंगल यूज प्रोडक्ट है. ओके, ऑन द अदर हैंड, ट्यूब वेल्स, ट्रैक्टर्स, पंप सेट्स, एक्सेट्रा आर एग्जांपल्स ऑफ ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स. ओके, सो ये ड्यूरेबल यूज के बट प्रोड्यूसर गुड्स, मतलब आप ट्यूबवेल है या ट्रैक्टर्स है, ठीक है, आप 20 इयर्स तक भी यूज कर सकते हो. पंप सेट्स को आप कंटिन्यूसली यूज कर सकते हो फॉर 10 इयर्स 15 इयर्स. ओके, बट दिस आर प्रोड्यूसर गुड्स, मींस व्हिच हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ अदर कमोडिटीज. Next is private goods and public goods. If you can distinguish goods on the basis of the ownership, then you will classify them into two groups. One is private goods, another is public goods. Private goods मतलब वो goods जो एक private individual, एक private person या एक private firm, organization, company, कोई भी उसको own कर सकता है. Just for an example, my car or my house, okay, या मेरा mobile phone, my laptop, etc. etc. ठीक है, clear? तो ये सब सारे के सारे एग्जांपल्स आर ऑफ प्राइवेट गुड्स. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, गुड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स. ऑल द गुड्स व्हिच आर ओन्ड बाय प्राइवेट बॉडीज आर कॉल्ड प्राइवेट गुड्स.
For example, a car, a house, a motorbike, a mobile phone, books, a television set, etc. are all the private goods. ठीक है, अगर कोई प्राइवेट पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, एंटिटी अगर इनको ओन करता है, ठीक है, तो ये सब प्राइवेट गुड्स हो जाएगी. Next is public goods. Public goods are all those goods which are owned by the government or you can say collectively by the society. Society as a whole उसको own करता है. ठीक है. Example are like roads या street lights, dams, bridges, etc. Okay. So these are there are large number of goods which are collectively owned by the society or the public or the government. These are called public और गवर्नमेंट गुड्स. ठीक है, जो सोसाइटी एट लार्ज, पूरा सोसाइटी मिलके जिस गुड्स को ओन करता है, ठीक है, या गवर्नमेंट ओन करता है, उसको हम बोलते हैं पब्लिक गुड्स. ओके. फॉर एग्जांपल रोड्स, ब्रिजेस, हॉस्पिटल्स, दैट इज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स एक्सेट्रा आर द पब्लिक गुड्स और द सोशल गुड्स और द गवर्नमेंट गुड्स. ठीक है, तो आप उसको पब्लिक गुड्स बोल सकते हो, सोशल गुड्स बोल सकते हो, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज गवर्नमेंट गुड्स. The next is the very important term, that is the term utility. Okay, so starting with the meaning of utility, utility is simply want satisfying power of a commodity. ठीक है, the want satisfying power of a commodity is called utility. Please remember this right now itself, very important term. Okay, so बहुत ही important है ये. The utility is want satisfying power of a commodity. मतलब कोई भी commodity का कोई ऐसा use या उसका कोई ऐसा power जो आपकी want को satisfy कर दे, that is being called as utility. Okay, or that can be called as utility. Okay, so the want satisfying power of a commodity is called utility. It is a quality possessed by commodity or services to satisfy human want. मीन्स आप ऐसे बोल सकते हो कि कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विस अगर आपके वांट्स को, आपके नीड्स को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, तो उसका जो क्वालिटी है, जो आपके नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करता है, आप उसको यूटिलिटी बोलोगे. ओके. Utility can also be defined as a value in use of a commodity because the satisfaction which get from the consumption of a commodity is its value in use. वैल्यू इन यूज मीन्स आप जब भी कोई भी कमोडिटी को यूज करते हो, ठीक है, तो आपको जो सेटिस्फेक्शन उससे डिराइव होता है, ठीक है, वो उस कमोडिटी को यूज करके, ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू आपने पे की है उसको यूज करके आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है, आप उसको भी बोल सकते हो कि इवन दैट इज यूटिलिटी. Next we start with the characteristics of utility. The first one is utility and usefulness. So utility is not same as usefulness. बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसका कोई यूजफुलनेस नहीं होता है या वो जरा भी यूजफुल नहीं होता है, बट स्टिल इट possesses utility. Okay, so anything having utility does not mean that it is also useful. ठीक है, so अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का यूटिलिटी है, it does not mean कि वो यूजफुल भी है. Okay, if a good possesses want satisfying power, it has utility. ठीक है, खाली कोई भी प्रोडक्ट में, ठीक है, एनी प्रोडक्ट, ठीक है, जिसके अंदर वांट सेटिस्फाइंग पावर है, तो आप उसको टर्म दे सकते हो कि उसके अंदर यूटिलिटी है. ओके, बट द कंजम्पशन ऑफ दैट गुड मे बी यूजफुल और इवन harmful. Okay, so for example, the consumption of wine possesses utility for a man habitual to drinking because it satisfies his want to drink, but the use of wine is harmful for health, but it has यूटिलिटी. ठीक है, सो वाइन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो उसको अगर हैबिचुअल है, ठीक है, कंज्यूम करता है डेली बेसिस पे, ठीक है, क्लियर, उसको कंज्यूम करने की आदत है, तो उसके लिए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का यूटिलिटी है, बट एट द सेम टाइम ये पर्टिकुलर जो वाइन है, ठीक है, वो पर्टिकुलर पर्सन के लिए हार्मफुल भी है. ओके, सो बट द यूज ऑफ वाइन इज हार्मफुल फॉर द हेल्थ, बट इट हैज यूटिलिटी. Thus utility is not usefulness. Next is utility and satisfaction. So utility and satisfaction are also not the same. ठीक है, ये दोनों में भी difference है. Okay, so what is utility? Utility is want satisfying power of a commodity. Okay, whereas satisfaction is the result of utility. Okay, so a utility is the quality or power of a commodity to satisfy human wants, whereas satisfaction is the result of utility. So satisfaction is the outcome of utility. अगर कोई पर्टिकुलर चीज आपको यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है तो वो आपको सेटिस्फाई भी करेगा. ओके, सो एन एग्जांपल इज एप्पल्स लाइंग इन द शॉप ऑफ अ फ्रूट सेलर हैव यूटिलिटी फॉर अस एज वेल एज फॉर अदर्स. ठीक है, बट वी गेट सेटिस्फेक्शन ओनली व्हेन वी परचेज एंड कंज्यूम देम. ठीक है, सो वो पर्टिकुलर एप्पल्स जो शॉप में है, ठीक है, फ्रूट सेलर के, ठीक है, उसका यूटिलिटी हमारे लिए भी है, वो फ्रूट सेलर के लिए भी है और किसी और कस्टमर्स के लिए भी हो सकता है. ठीक है, बट उसका सेटिस्फेक्शन हम लोग को कभी मिलेगा जब हम वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करेंगे एंड कंज्यूम करेंगे. ठीक है,
इज इट क्लियर? तो यूटिलिटी पहले आता है क्लियर एंड देन उसके बाद उसका सेटिस्फेक्शन. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज यूटिलिटी एंड प्लेजर. यूटिलिटी इज नॉट सेम एज प्लेजर. ओके, बहुत सारे कमोडिटीज का यूटिलिटी होता है, वांट सेटिस्फाइंग पावर होता है कमोडिटी का, बट वो प्लेजर नहीं होता, वो आपको एंजॉयमेंट नहीं देता. ओके, so it is not necessary that a commodity possessing utility also gives pleasure when we consume it. Utility is free from pain or pleasure. An injection possesses utility for a patient. ठीक है, अगर कोई भी पेशेंट को ट्रीटमेंट चाहिए तो इंजेक्शन लेना पड़ेगा. ठीक है, because it can relieve him of his illness. But injections give him no pleasure. Instead, it gives him some pain. ठीक है, तो utility is not same as pleasure. Next point is utility is subjective. Subjective here means utility differs from person to person. एक person को same commodity use करके बहुत extreme utility मिल सकता है, whereas same commodity कोई दूसरा person use करे तो उसको शायद average या below average utility भी मिल सकता है, that is below average satisfaction मिल सकता है. Okay, so utility is subjective and psychological concept. It means utility of a commodity differs from person to person. Utility of different commodities differs from person to person. Therefore, utility is subjective. Next point is utility is relative. Relative to time means utility of a particular commodity will change according to the time. ठीक है, अगर कोई particular commodity, कोई particular person कोई एक टाइम पे यूज कर रहा है, उसका सेम यूटिलिटी दूसरे टाइम पे, दूसरे पर्टिकुलर आप बोल सकते हो सीजन में या दूसरे कुछ आफ्टर सम डेज, ठीक है, उसका सेम यूटिलिटी उसको नहीं मिलेगा. ओके, so utility is relative concept. A commodity may possess different utility at different times or at different places or for different persons. In olden days, a tonga had a greater utility, but now with the invention of a bus, its utility has become less. Tonga is basically आप जिसको horse cart बोलते हो, ठीक है, clear? तो उसका utility और usefulness has decreased, ठीक है, because अभी बस आ गए हैं या तो आप बोल सकते हो modern vehicles आ गए हैं. So in olden days, टोंगा का रिक्वायरमेंट ज्यादा था, उसका यूटिलिटी भी ज्यादा था, बट अभी उसका रिक्वायरमेंट कम है, यूटिलिटी भी कम है. ओके, a raincoat has a greater utility in hilly areas during rainy season than in plain areas. Okay, because hilly areas में rainy season में बहुत ज्यादा रेन होगा, तो रेन की वजह से वहां पे रेनकोट का यूटिलिटीज भी ज्यादा होगा. ठीक है, whereas plain areas में रेनफॉल थोड़ा कम होगा. ठीक है, क्लियर? तो वहां पे रेनकोट का रिक्वायरमेंट भी कम एंड यूटिलिटी भी कम. ओके, a fan has a greater utility in summer than in winter. Okay, next is utility is abstract. It means utility is non-material thing. ठीक है, या बोल सकते हो it is intangible thing, a thing which you cannot see, touch and you can only feel. Okay, so utility is abstract which cannot be seen with the eyes or touched or felt with the hands. Okay, for example, the argumentative power of an advocate is abstract. ठीक है, एक advocate कितना अच्छा आर्ग्यूमेंट कर सकता है, ठीक है, इन द कोर्ट ऑफ लॉ. ठीक है, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट. ठीक है, आप उसको सिर्फ फील कर सकते हो. ठीक है, क्लियर? आप उसको सुन सकते हो. ठीक है, क्लियर? बट आप उसको एक्चुअली रिकॉर्ड नहीं कर सकते. ठीक है, सिमिलरली द यूटिलिटी इज एब्स्ट्रैक्ट. यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी कैन neither be seen nor touched or felt with the hands. The next important term is market. In general terms, what is a market? A place where buyers and sellers meet each other and exchange goods for money. Okay, so ऐसा कोई particular place, ठीक है, जहाँ पे buyers and sellers एक दूसरे को meet करते हैं, ठीक है, और goods and services exchange करते हैं. Okay, so what is a market? A setup where two or more parties engage in exchange of goods and services and information is called a market. Ideally, a market is a place where two or more parties are involved in buying and selling. The two parties involved in transaction are called sellers and buyers. ठीक है, तो एक particular seller होता है, ठीक है, और एक buyer होता है, clear? And these are both the parties involved in the market. The seller sell goods and services to the buyer in exchange of money. ठीक है, तो money in exchange होता है, ठीक है, और seller अपने goods या तो services exchange करता है, information भी exchange कर सकता है. ठीक है, There has to be more than one buyer and seller for the market to be competitive. ठीक है, अगर मार्केट के टाइप्स देखोगे आप, ठीक है, क्लियर, तो एक पर्टिकुलर मार्केट में एक बायर से ज्यादा होना चाहिए और एक सेलर से ज्यादा होना चाहिए, तो वो पर्टिकुलर मार्केट क्या हो जाता है? कॉम्पिटिटिव हो जाता है. कॉम्पिटिटिव इन नेचर मीन्स मार्केट के अंदर कॉम्पिटिशन क्रिएट हो जाता है.